to highlight. It is not only the military funding and prosecution. Now the information wing, the information arm of the India of Hindustan is also works hands in glove with these terrorists and this Fitna al Hindustan and Fitna al Khawarij. आपको मैं इसकी सिर्फ चंद मसाले देता हूँ, and you being in media will be able to recognize it very quickly. The first example is of Miawali base attack, which is on 4th November 2023. A day before, the Indian social media posts, tomorrow is a big day, so going to bed early. And then in the morning, it says good morning Miawali. ये आपने देखी होगी पहले भी. So there is the information prong. और फिर ऊपर इसका ये क्लिप देखें, जब वो वाकया होता है मियावाली का, तो how the Indian media, social media, electronic media plays up and glorifies this act of terrorism. चलाइएगा जरा. Now आगे आप ये देखें कि 6 अक्टूबर 2024 को हमारे चाइनीज दोस्तों के ऊपर कराची में अटैक होता है. उससे पहले इंडिया का सोशल मीडिया के जो उनके रॉ से जुड़े अकाउंट है, रॉ एफिलेटेड अकाउंट है, दे स्टार्ट क्लेमिंग बिकॉज दे आर वही तो वहां से प्रोसिक्यूट हो रहे हैं, वहीं से ऑर्डर्स मिल रहे हैं, वहीं से कहा जा रहा है, वहीं से सारी प्लानिंग हो रही है, तो वो पहले पोस्ट कर देते हैं, कहते हैं बिग डे इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स. और फिर जैसे ही होता है तो देयर मीडिया एंड सोशल मीडिया स्टार्ट सेलिब्रेटिंग इट कि जी हमने चाइनीज को कर दिया कराची में. देन यू सॉ दैट सेम थिंग हैपनिंग ऑन 11th मार्च इन जाफर एक्सप्रेस, कि जैसे ही जाफर एक्सप्रेस होता है उससे पहले वो कहते हैं कीप एन आई ऑन पाकिस्तान टुडे एंड टुमारो. फिर वो कहते हैं दी रोड टू पीस इन बलोचिस्तान पासेस थ्रू कश्मीर. और उसके बाद जब होता है तो देयर होल मीडिया इज सेलिब्रेटिंग दिस एक्ट ऑफ बार्बरिज्म, दिस हाईजैकिंग ऑफ ट्रेन. पूरी दुनिया इसे कंडेम कर रही है और इंडिया का मीडिया, सोशल मीडिया और वहां की पॉलिटिकल एलीट ऐसे है जैसे वहां पे कोई ईद का दिन हो गया. ये आपको जो नेक्सस है ऑफ देयर इंफॉर्मेशनल प्रॉन्ग नजर आ रहा है, सबको दुनिया को नजर आ रहा है, ही नहीं आ रहा कि ये फितना अल हिंदुस्तान और फितना अल ख्वारिज का हिंदुस्तान से जो गठजोड़ है, फॉर एनी कॉमन सेंस आप सामने रखें, आपको नजर आ रहा है. आगे जाइएगा. ये खुशदार का वाकया, इसमें भी अभी आप इस लिंकेज को देखिएगा. नेक्स्ट जाए. सुबह ये वाकया होता है एंड हाउ द इंडियन मीडिया, आगे चलिएगा, ये जरा देखते जाइएगा कि उनका मीडिया, सोशल मीडिया इस खुशदार के हिनियस कावर्डली अटैक पे कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं. देखिएगा. 7:58 AM, 8:05 AM, 8:07 AM, these are all Indian accounts जो कि रॉ और एफिलेटेड ये लोग इनके लिए, BLA के लिए, फितना अल हिंदुस्तान के लिए चला रहे हैं. 8:35, 8:45, they're all reporting धमाका हो गया, बच्चे हो गए, शहीद हो गए, मर गए. फिर तस्वीरें आनी शुरू हो जाती हैं. सुन रहे हैं आप? ये कौन सी दुनिया में मुल्क है जो कि सेलिब्रेट करता है दहशतगर्दों के एक्ट्स को, जो उनको इस तरह खुशी से रिपोर्ट कर रहा है. और ये अभी मैं आपको दिखा नहीं रहा, इसके बाद इनके आते हैं तजियाकार, इनके आते हैं रिटायर्ड फौजी, इनके आते हैं पॉलिटिशियंस, इनके आते हैं सिक्योरिटी एनालिस्ट, एंड दे आर thumping their chests. This is the same media, this is the same political elite that on the night of 6th and 7th, 40 innocent civilians died, including 22 women and children, and they are still claiming as if they have done a great deed. Never, I think, in the history of modern history, you have seen any nation, any media, any government celebrating killing of children and women the way they are celebrating. This is that low moral fiber and level that this current political elite of India has brought their society to. Next चाहिए. ये one of the
proxy of one of the arms of this fitna al Hindustan. This is on 11th May. इसको देखिएगा ये क्या कह रहा है. They issued a press release. I have highlighted the important parts for your consideration. They say, Fitna al Hindustan, what does it say? If we receive political, diplomatic and defense support from India, what is defense? Military support, equipment. پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے. کس منہ سے کہتے ہیں آپ کا تعلق نہیں ہے؟ نیچے پڑھیں وہ کہتے ہیں وی ایشور انڈیا ٹو اٹیک فرام دی ویسٹرن بارڈر, کہ آپ جب ایسکیلیشن کریں گے that if we assure India that if it makes the final decision to eliminate the state of Pakistan, BLA along with the entire nation is ready to attack from western border. We will become its, کس کا؟ انڈیا کا پریکٹیکل اینڈ ملٹری آرم. 11 مئی کو یہ را انڈیا ان سے یہ پریس ریلیز کرواتا ہے. کیوں کرواتا ہے؟ کیونکہ پاکستان کا جو اسٹیٹ ہے وہ ڈٹر نہیں ہو رہی ان سے. وہ میزائل مارتے ہیں, وہ ڈرون بھیجتے ہیں, وہ حملہ کرتے ہیں, لیکن پاکستان کے عوام کا ریزالو نہیں گر رہا. اس کی آرمڈ فورسز جو سی ہیں وہ سینہ کھول کے, سینہ ٹھوک کے کھڑی ہیں. Because we made a promise, our ancestors, our forefathers made a promise that we will safeguard the territorial integrity, sovereignty and honor of Pakistan at all cost. وہ اس کو لگاتے ہیں کہ تم اور یہ کہو کہ جی ہم ہمارے ساتھ مل کے ہوں گے. تو وہ جو چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا تھا کہ یہ 13 لاکھ کی انڈین آرمی ہمیں کورس نہیں کر سکتی, ڈٹر نہیں کر سکتی, تو یہ جو ان کا فتنہ ہندوستان ہے, ان کی ان پریس ریلیزوں سے, ان حرکتوں سے, ان بزدلوں سے, ان بزدلانہ کاروائیوں سے ہم کیا ڈٹر ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں, نیور ایور. نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھیے گا. دس از اندر اینگل آف دی ٹیررسٹ فیسٹ آف دس فتنہ ہندوستان اینڈ دیئر ماسٹر ہندوستان. سنیے گا ان کو. These all statements are recent. یہ ڈیٹس آپ دیکھتے جائیں. This is post پہلگام. This is on 11th May that this retired general صاحب جو ہیں ان کے, وہ بلوچستان بلوچستان he is howling because they are frustrated. جو 10 مئی کو ان کے ساتھ ہوا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اب کچھ کرو, ہم نے پالا ہوا ہے تم لوگوں کو اتنے عرصے سے فتنہ الہندوستان, اور چونکہ فوج کے RFC کے سامنے آتے ہو تو مارے جاتے ہو, وہ تمہیں لاشوں میں کنورٹ کر دیتے ہیں, تو جاؤ بچوں کی بسوں کو ہی جا کے مارو, کچھ کرو. بیکاز دس از آل ناٹ, یہ کوئی پرانی نہیں میں آپ کو دکھا رہا, یہ میں اب کی دکھا رہا ہوں. یہ وہ پہلے 6 مئی کی, اب یہ 11 مئی کو چیخ رہا ہے بلوچستان بلوچستان بیٹھ کے. یہ ہے وہ نیکسس, یہ ہے وہ فتنہ الہندوستان. اس لیے ہم کہتے ہیں ان کا کوئی بلوچیت سے, پاکستان سے, کسی نظریے سے کوئی تعلق نہیں ہے. مائی ڈیئر, ان کا تعلق ان کے ساتھ ہے. یہ ہیں ان کے ماسٹرز, یہ ہیں ان کے پرپٹریٹرز. دس از دی ایول فیس آف دس فتنہ الہندوستان. سنائیے.